Dhan Dhan Sadguru Ravidas Maharaj, and because so many things are happening here and some of the things are so critical, so sensitive, so for the sake of being on the right side of law, in the US I will go by written speech most of the time because I don't want to go wrong, because you people are doing one of the greatest things that is happening to the caste discourse. जाति के सवाल पर, इंसानियत के सवाल पर, जन्म के आधार के भेदभाव के सवाल पर इस समय दुनिया में जो सबसे शानदार चीज हो रही है वो आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। So, hello ladies and gentlemen and non-binary individuals. Jai Hind. Thank you for inviting me and thank you for California. This stage is so close to my heart for so many reasons. On this occasion of Baba Saheb Jayanti, before I move on to the main part of my speech, I would like to take a moment to pay tribute to Maya Angelou, an accomplished poet, memorist, and civil rights activist born in California, who gained global recognition for her literary contributions. Her most well-known work is I Know Why the Caged Bird Sings. She authored autobiographies, essay collections, and numerous books of poetry. I feel proud to acknowledge her legacy. I also want to mention that my favorite tennis player, Serena Williams, I also play tennis. She played tennis here in California, so California is very close to my heart for so many reasons. California is known for its progressive policies and its role in civil rights movement, and that's very commendable. The state of California, and that is the main part of my speech, is on the verge of making another history with a proposed new bill, SB 403. If passed, California would become the first US state to make caste discrimination illegal, and that may trigger thousands of processes worldwide. Maybe after this, we will have anti-caste legislation in the UK and Australia also. So that is the importance of this bill. यहाँ हो गया तो यूके में कास्ट का जो बिल है जो करीब 10 साल से रुका हुआ है पार्लियामेंट के लेवल पर, वहां पर वो फेडरल पूरे कंट्री के लिए वो बिल है, वो भी शायद इसके बाद उस पर बातचीत शुरू होगी। So this significant step forward in protecting against discrimination based on caste, a hierarchical system based on idea of birth-based graded purity and impurity, would represent a major victory for those fighting for social justice and equality. The bill will have a profound impact on the lives of South Asians and Africans and so many other people of all religions in California who have faced discrimination based on their caste, and as I said earlier, could set a precedent for other states and nations to follow. With utmost humility and admiration, she is not here now, I bow down to Honorable Senator Wahab for comprehending the agony of the former untouchables and oppressed people belonging to the lower and oppressed caste. She must have empathized with their pain, and I sincerely appreciate her from the bottom of my heart. Thank you, Senator Wahab, for doing so many good things. So this is the backdrop of today's event. But how we can forget who triggered all this? How we can forget Baba Saheb? It is a matter of great honor for me to be here and talking in the presence of such a august and noble gathering. This year we are celebrating the 132nd birthday of Dr. B.R. Ambedkar, great humanist and champion of social justice, and the person who was the chief architect of
Constitution, which is one of the longest constitution of the world. 2 days back, I was at the UN headquarters in the city of New York. A grand celebration was held there to celebrate the legacy of Dr. Ambedkar. So in 32 years, the persona of Dr. Ambedkar, the legacy of Dr. Ambedkar, the journey started at a small town in Madhya Pradesh, Mau. So in 132 years, that legacy, the itinerary of that legacy from Mau to UN headquarters, such a fabulous journey. Thank you, Baba Sahab, for doing so many good things in our lives. Dr. Ambedkar was a great sociologist, economist and jurist trained in the American academic traditions of modernity and pragmatism. These philosophical traditions remain his guiding light in the entire itinerary. In this context, I would like to name especially his professor John Dewey and also W.E.B. Du Bois. In his writings, Ambedkar acknowledged the influence of Professor Dewey on his thought process, and he was greatly influenced by Professor Dewey. Though Du Bois was not, they were contemporaries, and Baba Sahab was communicating with him during his lifetime, and he introduced to the anti-caste, anti-racial struggle and practical aspects of struggle for social justice and equality. So, I would like to thank America and Americans of the 20th century for taking good care of Baba Sahab in his formative years and helping him become what he became. Thank you, America, for doing this thing to Baba Sahab. बचपन में उनको बड़ा किया अमेरिकन से, more tradition उन्होंने दिया वो था. So on this occasion, I would also like to remember another great Indian who was incidentally Guru of Baba Sahab also, Mahatma Jyotirao or Jyotiba Phule, also known as the father of Indian modernity. He, along with his beloved wife Savitribai Phule and Fatima Sheikh, did pioneering work in the field of education and women empowerment. They started the first school for girls from all social groups. Savitribai Phule, this is time to remember her, and Fatima Sheikh also, these were the two teachers. At the same time, the Phule family was, now I am telling you about the correlation of Phule and America. At the same time, the Phule family was staunch anti-caste stalwart who worked for a caste-free society. During childhood, Mahatma Phule was enrolled in Scottish church school and probably learned the idea of Protestantism, egalitarianism from there. Incidentally, and interestingly also, Phule was also influenced by the historical events in the US. He was a keen observer of US history and was aware of anti-slavery struggle there. So Phule was watching what all was happening there in the US at that time. Back in the 19th century, during the American Civil War, more than 1 million white young men perished in the war in slavery in the southern Confederate state of America. So, whites were fighting whites to end slavery. That is very important. The impact of white people fighting for the abolition of slavery was so great that Phule dedicated his Marathi book, Gulamgiri, titled in English as Slavery, to the good people of the United States. That is very important. Published in 1873, the dedication of slavery reads, and I quote, "Dedicated to the good people of United States as a token of admiration for their sublime, disinterested and self-sacrificing devotion in the cause of slavery, and with an earnest desire that my countrymen may take their noble example as their guide in the emancipation of their Shudra brethren." The moot question, and I am asking this question, is why did the whites in America support the abolition of slavery at a time when we are watching and seeing this
opposition to SB 03, why whites in America support the abolition of slavery and gave life for the war to end slavery. As many as 1 million whites perished. Just imagine. And slavery, such a big human price indeed. This brings us to the important concept of empathy in our social life. Empathy requires us to actively step into those shoes and see the world from someone else's eyes. And I will later on talk about the idea of nation of Baba Saheb Ambedkar also. So empathy involves looking beyond our own perspective, appreciating others' experiences, connecting without judgment, and staying present in the moment. Empathy allows us to form meaningful connections with people whose life experiences and identities may be vastly different from our own, without erasing their unique identities and experiences. As former President of the United States, Barack Obama once said in a speech following Hurricane Katrina, I think that was 2006, and I'm quoting Barack Obama, I think we should talk more about our empathy. The ability to put ourselves in someone else's shoes, to see the world through the eyes of those who are different from us. When we broaden our ambit of concern and empathize with the plights of others, it becomes harder not to act and harder not to help. Anyways, however, it is important to acknowledge that we all carry our biases and prejudices. We are, as human beings, we all carry our biases with us. And we learn those biases during our early formative years in the process of our primary socialization, and we are more likely to empathize with people who look like us and less likely to intervene on behalf of those who don't. These biases can be unconscious or explicit and can manifest across differences in gender, race, sexual orientation, class, weight. So many other criteria can be there, cultural dynamics and all that. These biases stand in the way of collective action, and we must challenge them within ourselves. For those in position of power and those who benefit from systemic disparities, it is crucial to acknowledge their complicity. It's very important to acknowledge the privileges rather, and be willing to recognize and give up some of their advantages and privileges. It is essential to start thinking of all injustices as something we must collectively work against, not just the plight of a particular group, especially our own group. I have great hope from all the minority groups in California that they will support what is just and true. And I have hope from those also who are opposing. They should be the right side of the victory. They should be on the right side of history also. However, over and above, I also have high hopes from the so-called oppressor caste people also that they will also support this cause. So let's build bridges with them also. Let's not, there should not be anyone left behind. We should try to take everybody along. As Baba Saheb in his fight against caste oppression was supported by many persons who by accident of their birth were from the oppressor communities. Many Brahmins also supported Baba Saheb, and we have seen in Mahad Satyagraha and other movements also. And we can see that in the editorial board of his magazine Janata also. There were Brahmins with him. So many of them actually, white men also supported the abolition of slavery and the civil rights movement. So many whites were supporting Martin Luther King Jr. When he started his journey for civil rights movement. A woman or man should not be reduced to their immediate identity only, because that is not the only consideration that frames his idea and ideology. They can have informative capacities within themselves
and empathy can play a crucial role. The US is witnessing a growing movement towards recognizing and addressing caste-based discrimination. Several universities, including Cal State University, University of California, UC Davis, Howard University, and Colby College, as many as 23 universities, to be precise, have recently added caste to their non-discrimination policies, caste as protected categories. So it's happening now. Now is the time. Brandeis University set an example in 2019 by including caste in its non-discrimination policy. Additionally, as you all know that Seattle became the first US city to ban caste-based discrimination. If SB 403 or 403 is passed in California, it would serve as a template for other states in the US to enact similar legislation. So that is very important, and we should work together to achieve that goal. And one thing is very important, and I rather ask you, how do you think this is happening? Because if we talk about the oppressed identities, if we talk about so-called lower caste, they are not in large numbers. They don't have that much money. They don't have that much resources, public relation firms and all that. Despite these handicaps, they are winning the battle. That means 23 universities, they enacted their regulation for inclusion of caste in discrimination. तो आपके पास पैसा नहीं है उतना ज्यादा जितना जो आपको अपोज कर रहे हैं उनके पास है, नंबर्स नहीं है उतने ज्यादा जितना आपके पास, सबसे ज्यादा उनके पास नंबर्स हैं, उनके पास पब्लिक रिलेशन फर्म है, उनके पास इम्पैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है. इसके बावजूद वो रोक नहीं पा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को. कुछ तो होगा. कौन सी चीज है जो आपको जीत की ओर ले जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आप इस देश में 23 यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर रेगुलेशन बन गया? तो मैं इसमें कुछ आइडियाज मेरे हैं और बाकी आप लोग भी बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा कि वो लड़ाई जो इतनी गैर बराबरी की लड़ाई है, एक तरफ आपके पास इतने बड़े बड़े, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतना सारा पैसा है उनके पास जो उसको इन्फ्लुएंस में वो ट्रांसलेट करते हैं. इस दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नंबर्स उनके पास नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन लड़ाई कौन जीत रहा है? सो आई हैव four reasons for that. First, the issue of caste discrimination has gained more visibility in recent years thanks to the effort of activists and scholars who have raised awareness about the issue. And the most important work, I think, has been done by Isabel Wilkerson and Ajanta Subramaniam. If you have seen their work, Isabel Wilkerson, she wrote a book. The title of the book is Caste, the Origin of Artist Content. That is a very important book that is part of Oprah Book Club, and Oprah Winfrey sent this book to more than 100 CEOs of all top companies. So that book is there on the table of top 100 CEOs of United States of America. So because of those works and Ajanta Subramaniam's work, Caste of Merit, how caste played a role in shaping the engineering education in India, and how that translated into early first wave of migration when engineers came to America from IITs on all those organizations. So those activities are there, and scholars have done their bit. Even Suraj Yenge's book, Caste Matters, and all these works are being done. This has led to a greater understanding and recognition of caste-based discrimination and its impact on marginalized communities. My second reason for you winning this battle is that there has been a growing movement of solidarity and support from other communities, including allies from the dominant caste communities, who recognize the need for anti-caste legislation and are working to support and amplify the voices of oppressed caste identity. So that is very important, how you are building bridges with all other communities who are oppressed, or even those who are on the other side of the spectrum. So you are able to build those important solidarities and bridges. That is very important, and empathy is playing a role.
So, and third reason is that the legal, that is great about America, which Senator Wahab also told, that it's very important to talk about American dream and how that is making this thing happen. The legal and political system in the US provides avenues for marginalized communities to seek justice and demand their rights. This is very important. This has allowed oppressed caste people to advocate for themselves and their communities and enabled them to make progress in their fight against caste-based discrimination. Reason 4. The empathy, which I have already talked. The empathy factor has played a crucial role. The movement for caste equality has gained momentum due to the growing understanding and empathy towards their struggle. The effort of individuals and organizations to raise awareness about the impact of caste have helped to create a groundswell of support from legislative action, because without that support, it was not possible to reach that threshold where even you are thinking that a state legislation is on the somewhere very close, and there will be a day, and I hope that that day is not very far, then when you will have a federal legislation on the caste discrimination in the US. So we are inching towards that cherished goal that caste will become passed in this land of equality and yes. So overall, the combination of greater visibility and awareness, growing solidarity and support, and legal and political avenues for advocacy and action have all contributed to the success of the oppressed caste communities in getting anti-caste legislation passed in universities and cities across the US. So with this, I come to almost end of my remarks, and one part of my speech is still left. So who thought that in early 18th centuries, in all those early days, that slavery would become history one day? किसने सोचा था आज से 50 साल पहले स्लेवरी खत्म हो जाएगी, और हो गया। कब चीजें होती है, उस समय तो इतना नॉर्मल था, सारे स्लेव्स रखते थे मतलब, और स्लेव्स जो थे वो मान भी लेते थे, एंड वो देखते देखते खत्म हो गया। Who thought that women will also have the right to vote? आज कितना नॉर्मल लगता है कि औरतें जाके वोट डाला, काफी बड़ी लड़ाई हुई इसके लिए, इतना आसान नहीं था, लेकिन हो गया, चीजें बदल जाती हैं। LGBTQ राइट्स को रिकॉग्नाइज मिल जाएगा, उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। 30 साल पहले बहुत मुश्किल था, अभी भी इंडिया जैसे देश में मुश्किल है काफी, हालांकि चीजें आगे बढ़ी हैं। सो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, और जो इम्पॉसिबिलिटीज हैं उसको पॉसिबल बन जाने के लिए हिस्ट्री का एक मोमेंट होता है, इस लाइन के आप बार चले जाते हैं और चीजें हो जाती हैं। तो ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जैसे अगर आप देखें तो जब कास्ट ऑपरेशन एक लेवल पर था, उस समय तथागत गौतम बुद्ध आते हैं और वो चीजों को बदल देते हैं। एक खास समय में गुरु नानक महाराज आते हैं, और वो पूरा इलाका आज भी कास्ट ऑपरेशन के एटलीस्ट रिलीजियस फॉर्म से बाहर है। कास्ट को असल में दो तरीके से देखना चाहिए, जहां पर स्क्रिप्चर्स या टेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि आप कास्ट प्रैक्टिस करो, वो एक तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनका रिलीजन कह रहा है कि कास्ट को मत मानो, सारे लोग बराबर हैं, लेकिन साउथ एशिया की एक यूनिक उसकी बनावट है, वहां के हवा का असर है, वहां कोई भी रिलीजन पूछता है तो कास्ट प्रैक्टिस करने लगता है। तो दो तरह के एक्चुअली रिलीजियस प्रैक्टिसेस से कास्ट निकलता है। तो जो वो लोग हैं जिनका रिलीजन उनको कास्ट प्रैक्टिस करने के लिए नहीं करता है, उनकी लड़ाई आसान है, क्योंकि जब वो कास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो अगर ठीक से रिलीजन फॉलो करेंगे तो वो कास्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनके लिए इतना आसान है। तो वो एक लगभग एक लेयर पर है, उनको इतनी सी दूरी तय करनी है, उनको अपने रिलीजन को सही तरीके से फॉलो करना है। ये करते ही उनकी लाइफ से कास्ट खत्म हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी वो है जिनका कि रिलीजन कह रहा है सब बराबर नहीं है, कोई मुंह से पैदा हुआ है, कोई पैर से पैदा हुआ है, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से कास्ट है,
और आपका कास्ट, जैसे बाबा साहब ने कहा है कि आप एक बिल्डिंग में हैं, अलग अलग उसके मंजिलें बनी हुई हैं, आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में कभी नहीं जा सकते। अगर रिलीजन आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है तो आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप धार्मिक हैं तो आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाना ही नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोशिश करते हैं इसका मतलब आप अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो ये लड़ाई उनके लिए बहुत आसान है, जिनका रिलीजन उनको कास्ट फॉलो करने के लिए नहीं बोलते। तो ये दो तरह के लोग हैं। एनीवेज, मेरा उम्मीद है एंड देयर विल बी ए डे, जैसे मैंने कहा, एंड इट इज होप दैट though a day is not far off when caste discrimination will also become a thing of past। जैसे स्लेवरी खत्म हो गई, वैसे एक समय आ सकता है और वो समय बहुत करीब है, जबकि बाबा साहब ने कलम के नोट से 17 आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया ना कि अनटचेबिलिटी खत्म। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है उस एक दिन उस पॉइंट्स पर छुआछूत भारत से कानूनी तौर पर खत्म हो गए। तो ये इतना ही आसान है, वो एक जंक्चर है, एक पॉइंट है हिस्ट्री का, जहां पर आप एक छलांग लगाते हैं दूसरी तरफ चले जाते हैं। इतना मुश्किल वो है नहीं। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है जहां पर हम ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि कास्ट जो है वो मॉडर्निटी के साथ उसका मेल नहीं है। एक अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक परिवार की एक महिला ऑलमोस्ट रो रही थी कि हमारी बेटी के बुक रैक को मैं देख रही थी सफाई करते हुए, और उसमें आप समझ सकते हैं किसको ये समस्या है कि उस बच्ची के, तो वो कॉलेज जाने वाली लड़की के बुक रैक में बाबा साहब की किताब मिल गई, और ये उस माँ की चिंता का कारण है कि अब पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह के कंसर्न्स लोगों की लाइफ में कि वो पता नहीं किसको अपने दोस्त को ले आती है। तो ये मॉडर्न टाइम के साथ इसका तालमेल है नहीं। आप जब शहर में आ गए, आप जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गए, आप जब यूएस या यूके में चले गए, इसके बाद अगर आप बच्चों को इस लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, समझा बुझा कर लीजिए तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको फोर्स से रोकेंगे तो बच्चा रिवोल्ट कर जाएगा। आसान नहीं। तो मॉडर्निटी के साथ ये तालमेल ही नहीं है, क्योंकि कास्ट का जो ओरिजिन है वो जिस टाइम पर वो फ्रेम्ड है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी में चल जाता है, जहां पर खास तरह काम लोग करते थे, ट्रेवल नहीं कर सकते थे, कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में आप कास्ट को कैसे फिक्स करके रखेंगे? ये अगर इतना आसान होता तो फिर वो इंटरकास्ट मैरिजेज वगैरह अब जो शुरू हो रहा है प्रोसेस, मुझे लगता है कि मॉडर्निटी के साथ कास्ट का कोई मेल है नहीं। और बाबा साहब, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि क्योंकि यूएस के मॉडर्न ट्रेडिशन से वो पढ़कर बड़े हुए थे, पढ़ाई के दौरान उन्होंने सारे मॉडर्न आइडियाज पढ़े थे, वो इस टाइम को देख रहे थे कि चीज कहाँ जा रही है। और इस वजह से अगर आप देखेंगे, एक चीज मैंने अभी कल मैं शिकागो में था और मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब 1956 में बाबा साहब की डेथ हुई है, उस समय बाबा साहब का जो डेथ की खबर थी वो अखबारों की बड़ी खबर नहीं थी, छोटी खबर थी। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा अखबार भर के छपा हो, जबकि उस समय वो ठीक ठाक उनकी हैसियत थी। और बाबा साहब को 1956 में उनका परिनिर्वाण होता है और भारत रत्न बनने में 34 साल लगते हैं, 34 ईयर्स। कैसा क्यों हुआ होगा? और उसमें भारत रत्न तो किसी को भी मिला है। बाबा साहब से पहले काने को मिला, कर्वे को मिला, पंत को मिला, विश्वेश्वरैया को मिला, मतलब बांट के आपस में लोगों ने। मतलब यहां तक हो गया कि नेहरू की कैबिनेट ने नेहरू को भारत रत्न देने का फैसला कर लिया। नेहरू के चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, मतलब मैं मीटिंग कर रहा हूं, मतलब और मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैंने आपस में मीटिंग की और एक प्रपोजल पास किया कि मैं भारत रत्न दूंगा। ये भी हुआ है। होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है किसको देना है। होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत ने 1956 में डिसाइड किया कि मैं भारत रत्न दूंगा।
और वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन ने 1954 में ये डिसाइड किया कि मैं भारत रत्न ले लेता हूँ। भारत रत्न इस तरह से दिया गया, उस भारत रत्न के लिए बाबा साहब की डेथ के बाद उनकी लेगेसी को 34 साल इंतजार करने का, मतलब ये किस तरह की बात है। जिस आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पहला लॉ मिनिस्टर, जिसके थीसिस पर रिजर्व बैंक का फाउंडेशन रखा जाता है, जिसके आइडिया पर, जिसके रिटर्न नोट पर भारत में रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनने शुरू होते हैं, डैम बनने शुरू होते हैं, उन जिनके बनाए हुए हिंदू कोड बिल की वजह से औरतों को पहली बार प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, औरतों को पहली बार तलाक देने का राइट मिलता है, औरतों को अपने कास्ट के बाहर शादी करने के राइट्स मिलते हैं। इतने बेसिक काम जिस आदमी ने किए उसको भारत रत्न उनके रहते तो नहीं मिला, जब तक वो जिंदा थे तब तक तो नहीं मिला। 54 से शुरू हुआ था, 56 में वो नहीं रहते हैं, तुम्हें दे सकते थे, लेकिन 34 साल तक फिर नहीं मिलता है। अब लेकिन अब ये देखिए कि जिस समय बाबा साहब गए उस समय उनका जो कद बनाया गया वो काफी नीचे प्लेस किया गया था। आज की तारीख में बाबा साहब को जो नापसंद करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब को नापसंद करती है, उनका भी काम बाबा साहब की जय बोले बगैर नहीं चलता। एक भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में वैसी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरफ से इस तरफ तक पूरा स्पेक्ट्रम देख लीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो बाबा साहब की जयंती ही मनाती है। तो एक आदमी मरने के बाद लगातार बड़ा होता चला गया, मतलब होता है ना, एक आदमी की छाया जो है वो सूरज ऊपर है तो छोटी सी छाया है, सूरज जैसे जैसे ढल रहा है छाया लगने लगी। और आज की तारीख में बाबा साहब अब ये पॉसिबल नहीं है कि उनका नाम लिए बगैर भारत में कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। होता है दिल के अंदर से बहुत पसंद ना भी करते हो, लेकिन बाबा साहब को नाम लिए बगैर काम नहीं करते। ये किसी आदमी का बड़ा होना इस बात से साबित होता है कि जब वो नहीं है तब उसके जो काम है वो कितना असर कर रहे हैं। आप सोचिए कि भारत में आधी आबादी अगर महिलाओं की मान लें और उसमें जो जिन पर ये हिंदू कोड बिल लागू हुआ है उसकी संख्या अगर मतलब कई करोड़ लोग हैं, पहली बार प्रॉपर्टी राइट्स जिस आदमी के कहने से मिला है, तो ये सोचना ही अपने आप में। और जब हिंदू कोड बिल लाया उन्होंने, ज्यादा तो उनको अपोज किया, वो कैबिनेट में पास नहीं करा पाए। और अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भारत के सबसे बड़े बड़े लोग हैं वो खड़े हो गए थे कि नहीं हम ये नहीं पास होने देंगे, औरतों को प्रॉपर्टी राइट कैसे दे सकते हैं। मतलब उसमें उस देश का उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जो अपोज कर रहे थे। इतना एक समय के आगे का आदमी कि दुनिया कहाँ जा रही है इसके बारे में, क्योंकि वो अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रेडिशन में देख रहे थे कि दुनिया वहां जा रही है। उस समय को अगर आप समय से पहले नहीं पहचान सकते तो फिर आप क्या लीडर हैं। आज 60 साल 70 साल बाद क्या होने वाला है इसको देखने का अगर विजन नहीं है, ये अगर देखने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप लीडर नहीं है। इस मामले में ज्योतिबा फुले और बाबा साहब की बात, या इवन संत आपके हमारे गुरु संत रविदास आज से इतने साल पहले, 4 सेंचुरी लगभग पहले भी वो बेगमपुरा की बात सोच रहे थे कि एक ऐसा आइडियल टाइप, मतलब जिसको कबीर साहब प्रेम नगर बोलते हैं, कि एक ऐसा आइडियल टाइप जहां सबको अन्न मिलेगा और सब लोग प्रसन्न रहेंगे, ऐसा एक टाइम होना चाहिए। एटलीस्ट ये आइडिया, ये थॉट कि बेगमपुरा होना चाहिए, बिना सुख का एक शहर होना चाहिए, ये जो थॉट है, ये थॉट भी सब लोग, इतना सब ड्रीम भी सब लोग नहीं देख सकते हैं। सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस में ये सपना भी नहीं देख सकते हैं कि आप बिना दुख का शहर होगा, सबको खाना मिलेगा, सबका पेट भरा हुआ होगा। तो कितनी मामूली बात है। इस ड्रीम को देखना भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो बड़े लोग वो होते हैं जो आने वाले समय को देखें या ये बता सकें कि ठीक है आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन सपना तो देखो। ड्रीम में कम से कम सपना देखने में क्या करेगी। आप सपना भी नहीं देख पा रहे हैं कि सबको इलाज मिल जाए, सबको खाना मिल जाए, सबको एजुकेशन मिल जाए, सबको प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाए, सबको तलाक देने का अधिकार मिल जाए,
सबको किसी भी पसंद के आदमी के साथ शादी करने के राइट्स मिल जाए, कितनी बेसिक चीज है। लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग एक्चुअली ये होते हैं जो कि जिनकी कल्पना में पूरा देश होता है, पूरा समाज होता है, पूरी दुनिया होती है। इस मामले में बाबा साहब ने वो करके दिखाया आधुनिक समय में, जो पहले तथागत गौतम बुद्ध जो करुणा के सागर हैं उन्होंने देखा, जो संत कबीर ने देखा, जो नानक ने देखा, जो रैदास महाराज ने देखा, गुरुजी, इन सारे लोगों ने जो ड्रीम देखा, मेरे ख्याल से ये उसी ट्रेडिशन बाबा साहब है। अगर आप बेगमपुरा की पूरी कल्पना को देखें तो बाबा साहब को पहचानना बहुत आसान है। आप अब ठीक है 400 साल का फासला है, मुलाकात नहीं हुई है, सही बात है, लेकिन बगैर मुलाकात के विचारों में मुलाकात होना, आइडिया में मुलाकात होना, सपनों में मुलाकात होना, और उसको फिर आप लागू कर देते हैं। तो ये सारे लोग बाबा साहब के गुरु हैं। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर ये पूरी परंपरा जो कबीर, नानक, रैदास तक की पूरी परंपरा है, ये परंपरा बाबा साहब की परंपरा, ये फुले की परंपरा, ये साधु महाराज की परंपरा, ये पेरियार की परंपरा है, जो परंपरा हर किसी को अपना बेस्ट परफॉर्म करने का मौका दे रही है, जो जन्म के आधार पर दो आदमी को पहले से रिड्यूस नहीं कर दे रही है कि आप इधर हैं, आप यहां पर हैं। ये जन्म के साथ फिक्स नहीं कर रही है आपको मौका दे रही है, ठीक है, आप आगे पीछे दौड़ना, लेकिन दौड़ने की लाइन एक बना रहे हैं आप। एक आदमी की एक लाइन है, एक यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है, दूसरा यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब यहां से अगर सारे दौड़ रहे हैं, इसमें कोई आगे निकल गया, ठीक है, फाइन है ना, ये ठीक है। तो ये सबको एक लाइन पर खड़ा करके दौड़ने की एक सुविधा देना, एक पॉसिबिलिटी देना, एटलीस्ट आइडिया के तौर पर, ये इन बड़े लोगों ने किया है। उस ट्रेडिशन का काम यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। और मैं क्योंकि मानता हूं कि हम सारे लोग जो बाहर से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सारी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है, सारी दुनिया आपको देख रही है, इस काम को आप लोग किस तरह से ले जा रहे हैं और ये हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उसके पीछे आप लोगों के विचार की ताकत है और आप लोगों की वो मेहनत है। क्योंकि एक्चुअली हम लोग कई बार एंड रिजल्ट देखते हैं कि बिल पास हो गया, लेकिन या एक काम हो गया, ये आर्टिकल बन गया, ये चीज बन गई, लेकिन उसके पीछे का जो पसीना है, उससे पहले का जो थॉट प्रोसेस में, विचार में, चर्चा में, आपसी बातचीत में, एक दूसरे से गपशप में जो उसका जो माहौल बनता है ना, उसके पीछे बहुत आप सारे लोगों का दम है, आप लोगों की ताकत है। गुरु महाराज आप लोगों को शक्ति दे, तथागत गौतम बुद्ध आप लोगों को विजयी बनावे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत लंबा स्पीच इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में हूँ, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेशन प्रोसेस में। इस समय मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल हमारे विरोधी कर लें, तो मैं बहुत छोटी स्पीच के साथ अपनी बात खत्म करने की आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने खड़े के साथ सुना और आप लोगों का धन्यवाद इसलिए भी कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम आयोजित किया। सारे ऑर्गेनाइजर्स सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी वॉलंटियर्स जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।